बाद में बात करते हैं। ओके, तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओके, so first 15-20 minutes I'll be just discussing few general things, and then I'll move on to the topic of today, that is settlement geography. So I know that some students, some of you have joined for the who are new here. So right now we are in the middle of December. I very sincerely believe that the window that we have got to prepare our optionals, it is still almost end of January. ठीक है? So end of January is the target where you should have whatever you can prepare your optional, you should have prepared. ठीक है? Ideally speaking, by the end of January optional जो है वो prepare हो जाना चाहिए. You should reach at a level of confidence where you are confident enough to prepare for the prelims. Optionals do play a very important role. I don't think that I need to stress upon this more. अच्छी बात यह है, अभी का जो रिजल्ट आया है, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि द परफॉर्मेंस ऑफ ज्योग्राफी हैज़ बीन गुड and compared with many popular optionals which have been there in this past. Like for example, we are seeing a trend where Enthro results have not been able to cope up with the past performance. Comparatively, geography के results काफ़ी improve हुए हैं in terms of the number of people who have got interview calls. And because with us, other optional teachers are also there. Like Sanket sir is taking psychology. So there also we are seeing a kind of upward trend. Psychology में भी हमने देखा कि एक अच्छा upward trend है. तो जो अभी पिछले 4-5 साल में कुछ पॉपुलर ऑप्शंस बन गए थे, उनमें डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है, और जो थोड़ा सा पीछे हो गए थे, which used to be very popular earlier, in those optionals there is an upward trend. ठीक है, which is overall I think एक balancing out act है, which is a very welcome step. Okay, तो सबसे पहली चीज़ तो यही हमें अपने दिमाग में बिठाना है that ultimately if you do well things well in geography, it will take you to where you want to go. Going by the marks that has been there in the past 3-4 years, the target should be 270 plus. This is the target marks that you have to essentially make sure कि कम से कम इतना तो आएगा ही. If I am crossing 270, if I am reaching near 270, this means that optional is not a barrier. If you look into the selected students, majority of their marks would hover between 260 to 280 के बीच में उनके marks होते हैं. Those who are getting selected from these optionals. ठीक है, तो 270 का हमें फिगर टच करना है. अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं. If I want to reach here, there can be two ways. Very clearly the ideal way, which I know अभी तुम लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है अभी भी. And this ideal way is very clear, that I complete my optional before prelims. Before prelims. ठीक है. As I have told you, we have got around 45 days to do so.
ठीक है, particularly for the people who are joining now, it is, I would say, not possible. ठीक है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. ऐसे आइडियलिस्टिक टारगेट्स बनाने में प्रॉब्लम क्या होगी, दैट you will not be able to achieve your targets and it will become a point of frustration, and this will affect your productivity in other areas as well. ठीक है, तो मेरे हिसाब से दिस आइडियल अप्रोच इज नॉट करेक्ट. आई नो कि अभी यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शनल की क्लासेस कर ली हैं. ठीक है, बट बिलीव मी, जैसे तुम लोग हो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं और जो वो लोग हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा. Many times what happens, we confuse our movement with progress. ठीक है, not many times, majority of the times we confuse our movements with progress. So the thing is, just because people are attending classes, just because देख लिया है एक बार, they are thinking that कि progress हो गया. But that is not essentially a progress. Progress is something where you have consolidated what you have studied. Because believe me, what will happen if you have not consolidated, जो बीच में 4 महीने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होगी, in those 4 months you will be again back to zero. You cannot give time there, and ऑलमोस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, किसी चीज को मैं 3 महीने तक, 3.5 महीने, 4 महीने ना पढ़ूं, वट विल बी द एंड प्रोडक्ट? कैन आई से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आई विल फॉरगेट? ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव बीन रिपीटिंग सो मेनी टाइम्स टू यू, व्हाट इज योर लेवल ऑफ रिवीजन, व्हाट इज योर लेवल ऑफ रिवीजन. बट सबकी प्रॉब्लम यही है, आज का जो क्राउड है, आज का जो जनरेशन है, it is very much concerned about quantity and rather than quality. When we used to study, हमें टीचर्स 50-60% सिलेबस पढ़ा देते थे, उसी में हम बहुत खुश हो जाते थे, अरे यार इतना पढ़ा दिया. एंड अल्टीमेटली वी यूज टू कंप्लीट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल, और हो जाता था बिकॉज अल्टीमेटली 50-60% हमने रिवाइज कर लिया ढंग से. तो 50-60% मुझे अभी भी लगता है कि किसी ने अगर ज्योग्राफी में 75% सिलेबस को अच्छे से कंसोलिडेट कर लिया, देन ही इज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन. बिकॉज इफ यू लुक इनटू द सिलेबस, इट इज वेरी ह्यूज सिलेबस. तो हर जगह पर वो सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो आइडियल मेथड है, आइडियल वे, ये हो नहीं पाएगा. तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल. और प्रैक्टिकल का मतलब है कि ये जो 45 दिन है, इसको मैं 15-15 के स्लॉट्स में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है, एंड इन 15 आई विल कंप्लीट 1 मॉड्यूल, the classes and revision. I will complete 1 module, classes and revision. And if you talk about, essentially I will put my last 15 days in entirely in the revision of these 2 modules which I would have done. 500 प्लस में मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, सिलेबस को. तो कैन यू इमेजिन कि अगर मैं 5 में से 3 कर ले रहा हूं, इट इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस विच आई वुड हैव मेड. बिकॉज बिलीव मी, आज का जो एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट ओनली अबाउट कंप्लीशन, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी कंप्लीशन. ठीक है, सो इवन इफ आई हैव completed very well 4 modules and I go in the examination, then also I will have a better chance than a person who has completed all the 5 modules but has not properly consolidated. ठीक है, so keeping this in mind, if we are able to complete these 2 modules here, and in these 2 modules we are going to study about settlement geography, we are going to study regional planning,
वी आर गोइंग टू स्टडी बायो जोग्राफी प्लस एनवायरमेंटल जोग्राफी, ये एक मॉड्यूल है, एंड दूसरा है सेक्शन बी ऑफ पेपर 2। ठीक है, यानी कि पेपर 2 का 50% ऑफ द सिलेबस यू विल बी कंप्लीटिंग, एंड पेपर 1 के ऑलमोस्ट 50% ऑफ फिजिकल जोग्राफी एंड 50% ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। ऑलमोस्ट इसको हम मानते हैं 40%, बिकॉज सम टॉपिक्स टेक मोर टाइम लाइक जियोमॉर्फोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन जोग्राफी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आई विल बी कंप्लीटिंग समवेयर अराउंड 40% ऑफ द सिलेबस। सिलेबस वाइज अगर मैं जाऊं तो आई विल बी एबल टू कंप्लीट 40% ऑफ द सिलेबस थ्रू दीज 2 मॉड्यूल्स। आई रियली बिलीव, आई सिंसियरली बिलीव कि अगर 40% भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, थोड़ी बहुत उसके ऊपर आई हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड आंसर राइटिंग, ठीक है, देन अगेन इट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आई हैव अचीव्ड समथिंग टू गो विथ, एंड इफ आई गो विथ दिस, एंड अल्टीमेटली इफ यू टॉक अबाउट आई राइट द प्रीलिम्स, ऑब्वियसली इफ माई प्रीलिम्स इज वेल डन, देन वो जो 3 मॉड्यूल्स है वो कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि मेरा प्रीलिम्स भी हो रहा है, ऑलरेडी मैं 2 मॉड्यूल अच्छे से कंसोलिडेट कर चुका हूँ, तो दोज 3 मॉड्यूल्स वो कवरिंग देम इन द पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो मैं फिर से जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ ये बात, दैट वॉट एवर इज डन, स्टिल यू कैन फॉलो दिस सेम स्ट्रैटेजी, एंड अभी तक जो गलती की है कि यू हैव नॉट रिवाइज्ड वेल, यू कैन ओवरकम दैट मिस्टेक, एंड यू कैन मेक श्योर दैट एटलीस्ट कम से कम अभी से जो 2 मॉड्यूल हैं वो अच्छे से कंसोलिडेट तो हो जाएं। ठीक है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू दिस कंसोलिडेशन पार्ट। और कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है तो यू सी लाइक अभी हमारे टेस्ट जो चल रहे थे लास्ट, और जो अभी रिजल्ट आए, बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं। जनरली जो बच्चे एवरेज परफॉर्म कर रहे थे इन द टेस्ट, दे आर द पीपल हु हैव गॉट क्वालिफाइड। वेरी एक्सेप्शनली हाई स्कोरर्स हैव नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, so this brings me to one very big issue when your people are writing your test. पहले के जैसे अब टेस्ट भी नहीं होते। ठीक है, पहले क्या होता था, देयर वाज नो सच ऑनलाइन ये फालतू की चीजें थी ही नहीं। डेट ऑफ द टेस्ट वाज फिक्स्ड, छूट गया तो छूट गया। अब इंस्टीट्यूट्स ने इतनी लिबर्टी दे दी है तुम लोगों को कि तुम लोगों की आदतें बिगड़ गई कि कभी भी आकर के टेस्ट लिख लो, कैसे भी लिख लो, घर से लिख लो। तो अभी एक इंसिडेंट आया, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज राइटिंग द टेस्ट, उसकी टेस्ट की कॉपीज इतनी बेहतरीन आंसर्स हैं, आई विल शेयर विथ यू, इतने बेहतरीन आंसर्स हैं कि वो मॉडल आंसर से भी बेटर हैं। तो हमने, आई हैड अ डाउट कि हाउ समवन कैन राइट दिस मच गुड आंसर्स, सो वी कॉल्ड हिम टू जस्ट नो कि भाई वेयर यू आर, बिकॉज अगर सच में कोई ऐसा लिख रहा है तो वेरी प्रोस्पेक्टिव पर्सन फॉर द नेक्स्ट ईयर रिजल्ट्स। तो हमने उसको बोला कि हम तुम्हारी कॉपी चेक ही नहीं करेंगे भाई, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मच वेल। देन वी टॉक टू हिम, वी इंक्वायर्ड कि हाउ यू आर राइटिंग। तो वी केम टू नो कि सबसे पहले वो मॉडल आंसर्स को देखता है, फिर उसके बाद वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है उसके बारे में, और एंड देन 4.5 घंटे लेकर के अपने टेस्ट को कंप्लीट करता है। ठीक है, so obviously what will happen, he will get maximum marks, he will be the topper in the test, but we actually don't know what is actually performance in a situation of real situation of a test or examination. ठीक है, but when this same person will go in the examination, real examination, he will not be able to perform, and then we all will be surprised कि ऐसा क्यों हो रहा है। And what was the problem? This was the problem. The ideal approach.
So what is going to yield the results? It is not this ideal approach, it is the practical approach. And if you are here, I know my reputation. I know very well you are here because people have recommended you. हम ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते ही नहीं हैं, तो मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं दे आर वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी से आते हैं. किसी ने बोला होगा कि जाकर के 500 लगाओ, और जो ज़्यादातर बोलने वाले बच्चे होते हैं वो सीनियर्स और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं. तो यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे जो कंटेंट मिलता है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट. बट प्रॉब्लम फिर से वहीं पर आ रही है कि उस कंटेंट में भी तुम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो. तुम्हें लगता है कि मुझे उसको और भी इंप्रूव करना, लेकिन वो कंटेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है. 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, मैक्सिमम 300 वर्ड्स, इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते हो. और जो कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है वो उससे ज़्यादा ही है. उसी को कंसाइज वे में लिख पाना, प्रिसाइजली लिख पाना, समराइज करना, इट इज़ ऑलरेडी अ जाइगेंटिक टास्क. एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग योर प्रिपरेशन इवन मोर डिफिकल्ट, इवन मोर कॉम्प्लेक्स. अभी 2 दिन पहले एक मम्मी पापा आ गए एक बच्चे के कि उनका बच्चा तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट रहा है, थ्रू आउट यूनिवर्सिटी टॉपर एटसेट्रा एटसेट्रा, DU में एंड डिस्टिंक्शन से पास हुआ, ऐसा वैसा. वन गर्ल and was doing here also well in the test, but didn't qualify, didn't get the if you talk about ultimately the interview call. The same girl had got 183 marks in 2000 I think 21 के मेंस में. ठीक है. And 2022 में she joined the 500 plus classes. 2022 के मेंस में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ. She missed the bus by 5 marks. ठीक है. But her geography marks increased from 183 to 265. ठीक है. तो the thing was she joined the classes इन द प्रिलिम्स और मेंस के बीच में ज्वाइन किया. वहां पर इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ और सोच पाओ. तो देयर द थिंग इज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स. तुम्हें उस टाइम पर ऐसा लगेगा कि मैं केवल 500 ही कर लूं तो उससे मेरा काम हो जाएगा. एंड दस एट दैट टाइम द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली 500 प्लस, एंड दैट इज वाई व्हेन दे गो इन द एग्जामिनेशन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दे आर परफॉर्मिंग बेटर. एंड इसीलिए उस बैच से जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंपैरेटिवली बेटर होते हैं. ठीक है. इस बैच में क्या होता है, टाइम है, और जैसे ही तुम लोगों को टाइम मिलता है यू अगेन रिटर्न बैक टू आइडियलिज्म एंड एसेंशियली रिपीट दोज मिस्टेक्स विच आई कीप ऑन सेइंग कि नहीं रिपीट करना. एंड सेम थिंग हैपेंड विद दैट गर्ल. जब उसने मेंस लिखा, उसने उसके बाद अपने और एडिशन चालू कर दी. जैसे जैसे एडिशन होगा कंटेंट बढ़ता जाएगा, कंटेंट बढ़ेगा तो मेमोराइजेशन कम होता जाएगा. ये बहुत सीधा फंडा है. And this year we don't know, maybe she would have performed well in the optional because we don't have the marks till now. So we actually cannot say. ठीक है. So that is the thing that you have to understand कि ऐसी strategy बनाओ which can be actually implemented. I see people deciding कि भाई I will ultimately finish this book in 15 days. ठीक है. बट ये सब जो अल्टीमेटली ये जो प्लान्स होते हैं दे आर बेसलेस प्लान. मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग बेसलेस प्लान. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्लान बनाना है, एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ. सपोज मुझे देखना है कि लक्ष्मीकांत का प्लान बनाना है.
कैन आई से एक पेज पढ़ करके टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, उसमें 4-5 रिवीजन का जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसको ऐड कर लूंगा। यू हैव गॉट योर प्लान। और तब जब ऐसा प्लान बनाओगे तो देखोगे कि 15 डेज में तो वो हो ही नहीं सकता। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अचीव दैट। Then if it is practically impossible to achieve, then why it was part of your plan? Your plan was wrong. And that is why you are faltering, that is why you are unable to achieve your goals. अभी भी टाइम है, there is still sufficient time. First selection from guidance was of a girl शिवी सांगवान, पहले भी बताया मैंने शायद सब तुम लोगों को, और वो मेरे पास आई ही थी जनवरी में जब मैंने गाइडेंस खोला था, और उसका बस एक ही मोटिवेशन था कि उसी साल उसको निकालना था। She had changed her optional from pub-ad to geography, and because pub-ad she felt it was too subjective for her. Her mind was more like rational type. और उसका एक ही मोटिवेशन था, she had to clear the exam that year also itself. और उसका हो गया सिलेक्शन, she got qualified, although she didn't get IS, but she got qualified and she was able to avert her biggest fear. And what was her biggest fear? घर वाले शादी करने वाले थे उसकी, and that was her biggest motivation, and she actually qualified. And what she did, notes उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। So that is what you also have to do. You have to believe in something. If you are here, believe करो। अपनी आंखों से देखते हो कि जो क्लासेस होती हैं, जो कंटेंट मिलता है, it is far far superior than you can find in any book, any notes. बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ क्लास के अंदर, ठीक है? क्यों? क्योंकि आई रियली फील वो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। आई हैव ऑलरेडी, एक तरह से मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका जिस्ट मैं तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हें एग्जाम के लिए चाहिए। अब तुम उसमें वापस वो कूड़ा जो मैंने बाहर करके पहले निकाल दिया था, उस कूड़े को वापस ऐड कर रहे हो। तो व्हाट कैन आई से यार? तुम्हें लगता है कि मैंने सविंदर सिंह नहीं पढ़ी होगी? आई हैव स्टडीड सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है, क्लाइमेटोलॉजी वाली नहीं पढ़ी है क्योंकि मैंने उससे बेटर किताब पढ़ी DS लाल। ओशनोग्राफी वाली नहीं पढ़ी है बिकॉज उससे बेटर किताब पढ़ी है शर्मा वातल। लेकिन मैंने केवल यही किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी की और भी किताबें पढ़ रखी, क्लाइमेटोलॉजी की और भी किताबें पढ़ रखी। So what I am giving you is very condensed material. Your task is essentially what? कि उसको याद करो और उसको personalize कर लो, so that even if the questions here and there, the wordings change, you are able to recall and you are able to write good answers. It is all about managing the paper. And ऐसा क्यों होता है? You might have would have heard so many people saying after the papers are there कि यार सब तो 500 से आ गया, और ये हर साल होता है। फिर भी 500 में हर साल इतने बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा। So who is responsible? You are responsible, your strategies are responsible. So again the same thing I would say, practical strategy बनाओ। From 1st of February you cannot take risk. Even if you have cleared prelims before, you cannot take risk. Prelims has become so much dicey, we don't know. Many times बहुत से questions आते हैं, we are also confused. In a relaxed mode we are confused.
So it has become a strong elimination process now prelims. A little bit of weakness in prelims and you are out. It has become very brutal. Earlier when we used to write, there used to be a cushion, एक second paper भी होता था. अब तुम्हारे पास एक ही पेपर है, थोड़ी सी भी मिस्टेक और बाहर, and your entire year is wasted. And maybe the next year you will not have the same kind of motivation and energy. So we have just got 45 days now to whatever completion of the optional we can do, we will do. ठीक है. And I have told you before also, like few things, कुछ ऐसे areas हैं where if you talk about input ज़्यादा जाता है but output is very less. Like for example geomorphology, एक एवरेज प्रिपरेशन का 25% से ज़्यादा टाइम ले जाता है एक स्टूडेंट का, और उसका आउटपुट इज मच लेस दैन द अमाउंट ऑफ इनपुट यू गिव. देयर आर एरियाज लाइक रीजनल प्लानिंग, देयर आर एरियाज इफ यू टॉक अबाउट लाइक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, they are taking much less of your time but output is much higher. Climatology, oceanography, biogeography, environmental geography, input time much less and output huge. You know कि इनका relevance GS में भी बहुत बड़ा है. ठीक है, तो keep this in mind. Prepare your plans properly. मेरे हिसाब से make sure at least these 2 modules are completed along with the revision and consolidation. At least 40% syllabus खत्म करके तो बैठे होंगे ना. और ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें कभी पढ़ी नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगी. ठीक है, तो I hope the idea is very clear. Okay, so as I told you, we will be starting with settlement geography. Here the time is less. Motivation के लिए और इस तरह की बातों करने के लिए there are other teachers available on YouTube. So always you can subscribe to them. I don't indulge in so many things like this. बिकॉज मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है और मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा निखर के आती है जब मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो कंटेंट पर आ जाते हैं. एंड द टॉपिक दैट वी विल बी डीलिंग विद इज सेटलमेंट ज्योग्राफी. एज आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो, सेटलमेंट ज्योग्राफी इफ यू टॉक अबाउट is the most difficult part of human geography to deal with in the present examination trend. Perspective से questions एकदम straight forward आ रहे हैं. Populations के questions are not so much tricky, they are more if you talk about conceptual questions होते हैं. ठीक है, but क्योंकि अगर आपने सारी themes पढ़ रखी हैं तो population geography के questions easily attempt हो जाएंगे. Regional planning के questions they are very direct. Regional planning is easier to prepare. कुछ छोटे मोटे topics mentioned है, 2 दिन में prepare हो जाता है पूरा regional planning. And again direct questions will be coming from there. Models and theories you already know, direct questions are coming from models and theories. ठीक है, just the aspect they have added is the applied aspect they have added in models and theories. ठीक है, तो जो सबसे tricky portion है of human geography, it is settlement geography. Why I am saying this? Because in recent times, if you look into the trend of questions, they have asked you many type of questions. Like for example, if you have seen the PYQ trends, they have asked about exopolis. If you talk about, they have asked about resilient cities. ठीक है, so many new concepts which are in the research domain, which are there in if you talk about journals में आ रहे हैं. ठीक है, वो टॉपिक्स भी यूपीएससी ने सेटलमेंट ज्योग्राफी में पूछे. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो कि
रेजिलियंट सिटी का ही मैं बैकग्राउंड बताता हूँ. The question was asked essentially in the context of COVID-19, because you can understand settlement geography में one topic which is mentioned is sustainable urbanization. So sustainable urbanization के there are various models of sustainable urbanization. One model of sustainable urbanization is the compact city model. So compact city model में what is taking place? There is more of a vertical sprawl of the city taking place. You might have seen the culture of the high-rise apartments which are coming in. So that is basically the compact city model to achieve sustainable urbanization. But can I say that COVID-19 ने इसको भी challenge किया? Because if you were living in such apartment type residences, you were definitely more vulnerable to COVID-19. The spread, because you know, same lift system है जिससे so many people are coming going, so the chances of spread is much higher. And again there was rise already, you know, other factors भी थे, like for example from long time the issue of environmental hazards have also been one of the core issues of the urban geography, because many cities it has been seen, like India में ही अगर हम देखें तो you know that urban floods phenomena has fundamentally increased. The cities, if you talk about, are facing the issue of, if you talk about heat waves in recent times. So they were already, if you talk about problems of the environmental hazards, and definitely COVID-19 was a added problem. And in this context, again, in the literatures, if you look into the journals, there was so much talk about resilient cities. और उसी साल उन्होंने essentially question भी पूछ लिया resilient cities पर. ठीक है. तो अर्बन ज्योग्राफी में कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर वी विल बी स्टडीइंग द थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द सिलेबस. ठीक है, लाइक द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनाइजेशन, particularly the ideas or the various type of cities which has been given by Edward Soja. ठीक है. So अब exopolis अगर हम बात करें तो various type of, if you talk about policies which have been given by Soja is one of them is the exopolis. ठीक है. अब किसी अगर एग्जामिनर ने एक्सोपोलिस पूछा है तो इसका मतलब वो बाकी चीजें भी पूछ सकता है, लाइक द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न अर्बनाइजेशन में Soja has talked about various concepts, like for example there is the concept of heteropolis. So you should be aware about what is essentially this concept of heteropolis, concept of sim cities. It is part and parcel of that. ठीक है. तो ऐसे करके टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक एग्जामिनेशन में उसने पूछ लिया. एंड डज दिस मीन्स कि मुझे बाकी 5 पता होनी चाहिए? क्योंकि अगर पूछा है तो बाकी 5 में से कभी भी आ सकता है. ठीक है. तो इस तरह के सेटलमेंट ज्योग्राफी में देयर आर, इफ यू टॉक अबाउट, नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ कंटेम्पररी थीम्स. ठीक है. सेटलमेंट ज्योग्राफी, इफ यू टॉक अबाउट, वाज वन ऑफ द डिसिप्लिन्स और वन ऑफ द सब डिसिप्लिन्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी which was very much affected by the, if you talk about positivism trend. Positivism के बाद उसमें बहुत सारे changes हुए जो अलग अलग changes होते गए. We'll talk about all those things today. ठीक है. But that is what is settlement geography. So if we look into the settlement geography, you know, there is 2 type of settlements, rural and urban. If you look into the syllabus, 10% of the syllabus is here and 90% of the syllabus is here. Obviously you can understand, अगर हम देखें तो पहले भी मैंने इस बात को बताया that our geography is nothing but Eurocentric. So we are just copying the geography of the West, and that is what we are studying. So in their model, you know that majority of the people are living in cities, and obviously their focus is on the cities. Obviously you can understand also we have adopted their development model. That means in future हमारे यहाँ भी क्या होगा? There will be more people living in the cities. So no doubt we have to focus upon the urbanization. Urbanization is essentially the future. ठीक है. यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं they are very static
So we'll prepare them today and they will not be a problem. सीधे questions आएंगे. Here, however, as I told you, there might be several questions which are very dynamic type of questions which can be asked. ठीक है? But overall, you have to understand that the model of development which we have adopted, no, there is no doubt that urbanization is the future. And when you are beginning a topic itself, you can always start with a perspective about a topic. So general tendency, if you look into people's mind, to look at the urbanization phenomena is the tendency of seeing urbanization as a problem. Okay? But can I say urbanization is a problem because the way urbanization has been done. थिंक करो कि अगर एक लैंडस्केप है और उसमें बहुत सारे इधर उधर विलेजेस दे आर स्कैटर्ड सो मच, कैन आई से दे हैव देयर ओन लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? यस और नो? दे हैव देयर ओन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? व्हाट इफ वी कंसेंट्रेट दीज पीपल हियर? Is there lots of land which becomes free, which can be essentially used for a variety of purposes? Like think about today, our target of the forest policy has always been to achieve 1/3 of area under forest. But can I say we are far away from it? ठीक है, we have just reached around 24%. उसमें भी tree cover को जोड़ करके manipulate करके we are giving these numbers. But if there is an area free, can we say we can dedicate that area for these kind of ecosystem services के लिए dedicate किया जा सकता है? And overall, in terms of habitability, it would become better. So from the first thing, we can see urbanization not as a problem but as a solution to various problems which we are facing. ठीक है? So let us start with this objective in mind, and settlement के 2-3 टॉपिक है सिलेबस में. So types and patterns of rural settlement, environmental issues in rural settlement, these are the 2 topics mentioned in the syllabus of paper 1. ठीक है? So if you look into like discuss the role of site in determining the types and patterns of rural settlement, this was asked in 2016 में पूछा गया. ठीक है? So number of things we need to know about the rural settlements. First, there are 2 terms that we have to be very clear about. One is that of site and second term is that of situation. So there is site and situation. Site is essentially what? It refers to the actual piece of ground. Site is the actual piece of ground on which the settlement is built. It is the actual piece of ground on which the settlement is built. ठीक है? So that is site. अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो साइट प्राइमली रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द फिजिकल फैक्टर्स. Physical factors. Situation, on the other hand, it is essentially the it refers to the various socio-economic factors which are responsible for development of settlements.
ठीक है। तो जो अगर मैं लोकेशन के कंटेक्स्ट में देखूं तो एक तरह से साइट क्या है, एब्सोल्यूट लोकेशन, एंड सिचुएशन क्या हो गया, इट इज रिलेटिव लोकेशन। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके देयर कैन बी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अबाउट द साइटिंग फैक्टर्स। So both of them together are referred to as the citing factor. ठीक है, सो दैट इज द केस। तो सबसे पहली चीज ये हमें समझनी है। दूसरी चीज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेटलमेंट्स, settlements have three type of characteristics which we can study. First is the type of settlements. So if you talk about the type of settlements, type essentially refers to the degree of agglomeration or dispersion. The degree of agglomeration or dispersion of the units or residential units forming the settlement. Of the residential units forming the settlement. ठीक है, so you know कि टाइप कई तरीके के हो सकते हैं। लाइक वन टाइप ऑफ सेटलमेंट इज द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, वी यूज नंबर ऑफ नेम्स, अदर नेम्स, लाइक दे आर समटाइम्स रेफर टू एज न्यूक्लियर, कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियर सेटलमेंट्स। ठीक है, देन ऑन द अदर side of the spectrum is the dispersed settlements. So obviously you can understand compact में क्या है, अगर ये लैंडस्केप है, सारे हाउसेस को एक जगह पर कंसेंट्रेट कर दें, this is basically what, this is compact. On the other hand, if you talk about dispersed, I distribute the houses randomly here and there, they are distributed, this is basically what, this is a dispersed pattern of settlements. ठीक है, पैटर्न मैं गलती से बोल रहा हूं, टाइप ऑफ सेटलमेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट इन बिटवीन देम देयर इज सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। तो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स एक और टाइप होता है हैमलेटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, तो हैमलेटेड सेटलमेंट कैसे होंगे, अगर यहां पर कुछ 10 हाउसेस के आसपास एक जगह पर दे आर एग्लोमरेटिंग, देन व्हाट विल हैपन, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज अ हैमलेटेड सेटलमेंट। ठीक है, हाउएवर अगर ऐसा हमें मिल रहा है कि एक पैटर्न दिख रहा है वेयर दीज हैमलेट्स आर फाउंड एट अराउंड अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, so this type of settlement type is referred to as the semi compact. ठीक है, so you have to be very clear from the first day itself that when you are studying type, you are talking about the degree of agglomeration or dispersal. ठीक है, then there is the pattern. So pattern is essentially what? It is the study of the map view of the settlements. It is essentially, it tries to understand what? To study the shape, or better word is geometrical shape, that the settlements unit make. Like for example, you can understand the most common type of pattern is the rectangular pattern, but you know rectangular के अलावा बहुत सारे हो सकते हैं,
रेक्टेंगुलर के कितने सारे वेरिएंट्स होते हैं, लाइक यू नो वन इज द अदर than rectangular, circular patterns can be found. There can be, we can find linear patterns. We can find, if you talk about star shaped patterns, can be found fan shaped or triangular patterns can be found. ठीक है, so variety of patterns, if you talk about checkerboard pattern is a variant of rectangular pattern. ठीक है, हेरिंग बोन पैटर्न, so बहुत सारे तरह के पैटर्न्स मिलते हैं. So when we are talking about pattern, clearly we are talking about the geometrical shape. ठीक है. Third thing which is also we study about the settlements, but it is not mentioned in the syllabus of paper 1. It is the morphology. The morphology of settlements. So you know morphology क्या है? It is the study of land use. It is the study of land use pattern in a given rural settlement or in a given settlement. So that is essentially the morphology. ठीक है, so I hope it is clear. तीनों में डिफरेंस, क्योंकि हमारे सिलेबस में यहां पर यही दो है तो हम अभी इसी पे फोकस करते हैं. पेपर 2 में वी विल सी morphology is also mentioned. There we'll talk about in detail about the morphology. Now can you understand, जब 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, where it was saying discuss the role of site in determining the types and patterns of rural settlement. ठीक है, there will be at least there would be more than 50% of the people writing जिनको साइट का मतलब नहीं पता होगा. जो बहुत सारों को पता भी होगा, they would have overlooked that you had to give example of both. टाइप को कैसे अफेक्ट कर रहा है और पैटर्न को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये दोनों चीजें बतानी थी. ठीक है, एंड अगर दोनों चीजें नहीं बताई हैं आपके मार्क्स वैसे ही कम हो जाएंगे, एंड देन यू विल कंप्लेन कि ज्योग्राफी के साथ नाइंसाफी हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स of rural settlements is function of site and situation. मैं citing factors भी लिख सकता था, it wouldn't change. So I'll give you 2 minutes. Frame your answer. You don't have to write, you just brainstorm, frame your answer in your copies. Think what can be introduction, what will be the parts of main body, and what can be the conclusion.
ओके, तो इसमें हम कई तरीके से आंसर लिख सकते हैं. लाइक अगर मुझे मेन बॉडी को फ्रेम करना है तो आई कुड हैव रिटन एन आंसर रिलेटेड विथ, एक पैटर्न ये हो सकता है कि आई राइट द रोल ऑफ साइट, ठीक है, एंड साइटिंग फैक्टर्स लिए, एंड इन ईच ऑफ दीज फैक्टर्स व्हाट आई डू, आई गिव एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आई हैव टू गिव, टाइप्स, हाउ अ पर्टिकुलर साइट, लाइक अगर मैं सपोज करो कि पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ साइट लाइक टोपोग्राफी को लेता हूं, तो हाउ टोपोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टोपोग्राफी कैन लीड टू tendencies towards agglomeration or compactness, or how it can lead to tendencies towards dispersal. ठीक है, तो अगेन आई कैन टॉक अबाउट लाइक दिस. एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आई कैन, सो अगेन सेपरेटली मैं सिचुएशन के लिए लिखूंगा. So this is one way in which we can write. Other way is I write particularly with respect to compact settlements, ठीक है, I write separately for dispersed settlements and I write separately for semi compact. ठीक है, both of them are equally good. ठीक है, there is no problem in any of them. I believe कि अगर आपके पास स्पेस है तो इस मेथड को यूज करो. If you have to write in short, you use this method. ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपांसिव बात करते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड आल्सो एज अ 20 मार्कर. तो आई कैन स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन हियर. सो इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, बहुत सारे तरह के इंट्रोडक्शन हो सकते हैं. एक सिंपल इंट्रोडक्शन हो सकता है वेयर आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग द एग्जामिनर मेनी थिंग्स कि तुमने जो पूछा है मुझे पता है, so you cannot trick me. So I can say the settlement type, comma, that is the degree of agglomeration or dispersal, comma, depends upon the relationship between the centripetal and centrifugal forces, which in turn are function of site and situation, which in turn are function of site and situation. Then I'll come to the main body. Can I say here I can write about one line what is site and what is situation. So अभी हमने लिखा था इसके बारे में. So I can start the main body with that, and then I'll say that interplay of these generates centripetal or centrifugal tendencies leading to development of either or leading to development of compact, comma,
dispersed or semi compact rural settlement types. Rural settlement types. So there will be this, then I'll put up a heading and I'll say role of site and situation in development of compact settlements. I'll put a heading also here, subheading site. So I would say that several site factors like topography, climate, और क्या हो सकते हैं, hazards etc. generate centripetal tendencies. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देने लगेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आई विल टेक द केस ऑफ क्लाइमेट. So if we talk about climate plays a role, as the climate, it determines water availability. In a given area. So climate is affecting how? It is affecting, determines through water availability. This is one way in which basically climate affects. या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लाइमेट के बजाय क्या लिख सकता था, वाटर अवेलेबिलिटी. ज़्यादा बेटर वही है, क्योंकि बुक्स के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी ही टर्म लिखा होता है. तो आई थिंक इट वुड बी बेटर. सबसे पहले अगर कोई एंशिएंट टाइम्स में पीपल वुड हैव स्टार्टेड टू मेक villages, the first thing they would have looked for is whether water is available or not. ठीक है. So presence of water, what it does, presence of water gives rise to wet point settlements. ठीक है. What it has, water availability generates the centripetal force, which gives rise to wet point settlements. Number of examples can be given. Like one of the very good examples is, can we say such type of settlements are very common in deserts? Deserts में होंगे. जनरल परसेप्शन डेजर्ट के बारे में क्या है, वहां कैसे हाउसेस मिलते हैं, कैसे सेटलमेंट्स मिलते हैं, डिस्पर्स्ड. दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन. ठीक है. डेजर्ट, इफ यू टॉक अबाउट, द एनवायरनमेंट इज वेरी हार्श एंड सर्वाइविंग अलोन इन द डेजर्ट is a very, very difficult task. So in deserts, what happen? In desert areas where there is location of oasis, ठीक है, that will be the point where such centripetal forces would be generated. So in these areas, what will happen? There will be generation of small compact settlements will be generated depending upon the size of the oasis. ठीक है. So again, that is a very, very good example. Can we say there are several other such wet point type of settlements? Like for example, tell me, if you talk about in India, अगर हम देखें तो Indo-Gangetic plains में, do we find that the surrounding the rivers
there is development of such kind of compact settlements, very very common. That is basically what? That is wet point settlements उनको बोलते हैं. Then second thing is the topography. So topography manifests itself in what? Manifests itself in the slope conditions. Slope conditions. So tell me, can we say gently sloping to flat plains? Gently sloping to flat plains, will they generate the centripetal force? Centripetal force is generated. In such areas, according to Vidal, so Vidal de la Blache believes that in such areas there is tendency to utilize maximum land for agriculture. Maximum land for agriculture. Thus, tell me, can we say efficiency is achieved when most of the houses can be concentrated at one place? And does it mean that means more land will be available to perform cultivation? Okay. So again, in such areas, what we find that there is this kind of tendency. So tell me, can we say such type of settlements will they be very common in such fertile river valleys, like the case of Indo-Gangetic plains? Very very common. Others, like for example Huanghe Valley in China, very very common. If you talk about case of Nile River Valley in Egypt, all of these are examples of this case. Okay, so wherever such fertile plains will be found, this kind of tendency will be seen. Okay, other factors of site can also play important role. Okay, like for example, if you talk about another factor is the factor of environmental hazards. Environmental hazards. So several type of environmental hazards, like for example, if we take the example of floods. So if an area is flood prone, okay, in flood prone zones, can we say high grounds will generate centripetal tendencies? Yes or no? High grounds will be generating the centripetal tendencies. ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? कैन वी से कि अगर मैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में जाऊं तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, भांगर एंड खादर. Khadar is the young flood plains which are there. Bhangar is the old flood plain which is also located at higher level. So where most of the settlements are located? On the Bhangar. Okay. So on the Bhangar land we will be finding lots of compact settlements would be present. Okay. So several such kind of factors of if you talk about site, it affects the development of compact settlement, but not only site but role of situation. The role of situation also leads to that. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला एक फैक्टर है
सिचुएशन के अंदर इट इज बिहेवियरल फैक्टर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ब्रॉडली लिखना है तो इसको लिख सकते हो सोशियो साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल। ठीक है, सो टेल मी, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स, can we say companionship is the basic necessity of humans? Companionship is a basic necessity of the human beings. Is a basic necessity of the human beings. Why this necessity is generated? There are psychological reasons, but there are social factors also. There are social reasons as well. So this necessity is generated due to both psychological and social reasons. ठीक है, for example, if you talk about the social factors, so लिखो इसमें, necessity for cooperation is required in activities like regulation and control of water, comma, digging of wells, comma, preparation of agricultural fields for cultivation, etc. ठीक है, so that is another very dominant factor which is there. Second category of factor, मैं इसको categorize कर रहा हूं, ठीक है, so second very important category of factor is the economic factors. So if you talk about the economic factors, इसके कई part हैं economic factors के, like for example, one economic factor is essentially the land tenure system. Land tenure system. ठीक है, so according to Vidal de Lablache studied the landscape of France, and he found that in certain areas the land tenure system is such that there is fragmentation of land. There has been fragmentation of land, and this fragmentation of land ultimately leads to what? अगर fragmentation हो गया तो people are working far away from each other, but there is also necessity of companionship. So this fragmentation, according to him, is counterbalanced. Is counterbalanced by development of compact settlements. Development of compact settlements, where the village becomes the meeting ground for the people. For the people. ठीक है, so that is one of the factors. Then there are other economic factors as well. Like for example, if you look into the nature of agriculture. So generally what we find, tell me, can we say nature of agriculture is such that it is seasonal in nature? Is agriculture seasonal? Does it depends upon the rhymes of the climate? ठीक है, so can we say when the agriculture is seasonal, that means there are parts of the year when there is unemployment.
So the seasonal nature of agriculture prompts development of compact settlements, whereby demand is generated for other goods and services. Whereby demand is generated for other goods and services. Which in turn generates employment in the off season. Which in turn generates employment in the off season. ठीक है? So that is one of the very important factors. Then if you talk about other type of similar type of factors, अगर agriculture में ही रहें, तो another is the type of agriculture, typology of agriculture. ठीक है? So certain types of agriculture like the intensive subsistence farming. Tell me, does this intensive subsistence farming, is it labor intensive? It is very clearly labor intensive activity. And will it require large population? ठीक है? So it will give rise to, this need would give rise to large compact settlements. So tell me, can we give the examples of monsoon Asia where rice cultivation is done? Whether you talk about India, whether you talk about China, even in Southeast Asia. ठीक है? So type of agriculture also plays a very important role. ठीक है? Then there are some socio-economic institutions they will also play a role. Like for example, think one social economic institution is the local money lender. So tell me, local money lender, will he generate centripetal tendencies? He will essentially generate centripetal tendencies. So obviously he will be more interested to give loan to people of the village, because recovery of the money will be much easier than giving to people who are living in somewhere else. So the local money lender will clearly generate centripetal tendencies. Similarly, if you talk about others, like for example, certain kind of socio-economic systems can be there. Like if you talk about in India की अगर हम बात करें तो there was used to be जजमानी system. So जजमानी system में the landlord used to behave as jajman, and jajman was the person who was responsible for taking care of the families of the laborers, all the needs of the laborers. So again, such kind of systems will also generate what? Centripetal pull. ठीक है? So that is another factor. तो यहां पर मैंने सारे के सारे को ग्रुप कर दिया इकोनॉमिक के अंदर. अब अगर एग्जाम में लिख रहे होगे तो यू कैन ऑलवेज मेक इट एज पॉइंट्स, बट व्हेन वी आर क्लबिंग देम अंडर वन बिग हेडिंग देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिकॉल. ठीक है? एग्जाम में ऑलवेज जितने ज्यादा पॉइंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज दैट विल शो भाई अगर मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं तो एग्जामिनर विल बी बाउंड टू गिव मी बेटर मार्क्स. ठीक है? सो वहां पर इसको नंबर्स में ब्रेक कर सकते. देन इफ यू टॉक अबाउट देयर विल बी सम सोशल फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी देयर.
तो अगर मैं सोशल फैक्टर्स में जाऊं तो सोशल फैक्टर्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट इज द religious centers. Religious centers, which can we say they will also have centripetal pull? Well, they will attract people. ठीक है, so again that is one of the things. Then if you talk about next is social के अंदर भी लिख सकता हूं, अलग से लिख दे रहा हूं. Historical factors can also be the reason. ठीक है, so you can understand in history there was no such kind of nation states that we see today. ठीक है, there was small clans which used to fight among themselves, and thus in this history defense was a very important factor. ठीक है, defense was a very important factor. Thus what we will be finding, if there is the issue of defense, again it will give rise to what? Compactness. It will give rise to compactness. Number of examples are there, like for example अगर हम देखें तो very commonly you will be finding in western Rajasthan, और western Rajasthan में these villages will also be walled villages. ठीक है. Similarly, if you talk about one very famous example is of the Naga villages which are located, compact settlements located at the hilltops. ठीक है. Similarly, there are others like for example villages of Hansa tribes of Nigeria. Hansa tribes of Nigeria. All of these are examples of the historical factor of defense. ठीक है. Then if you talk about, there can be some other factors. One important category is the political economic factors. Like for example, this type of factor is very common where there is prevalence of cooperative farming. Cooperative farming is taking place. Like for example, you know, the case of Russia, China. Again, what has happened in these cases, there has been development of planned compact settlements have grown. ठीक है. और अगर हम बात करें इंडिया के केस में, हो सकता है इस तरह के जो प्लान्ड सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स एमर्ज हुए हैं, एंड दिस काइंड ऑफ प्लान्ड सेटलमेंट्स हैव एमर्ज्ड इन केस ऑफ इंडिया अलोंग द इंदिरा गांधी कैनाल, along the Indira Gandhi Canal region. ठीक है. So again, these are the factors which have led to the case of compactness. Then role of site and situation in dispersal. So again, same thing. First is the role of site. So again, we can talk about a very similar type of things. First very important factor is topography. So again, you bring back your Vidal. So Vidal, what he found a direct relationship between degree of ruggedness was directly related to degree of dispersal. Degree of ruggedness was directly related with the degree of dispersal.
Very good example of this is found in the Malwa Plateau region. Malwa Plateau region. So here the degree of ravining, degree of gulling and ravining also has determined the degree of dispersal. Also determines the degree of dispersal. Okay, so topography plays a very important role. Then if you talk about the case of harsh climate, so harsh climate also does what? It gives rise to dispersal tendencies. Very good example of this is the case of upper slopes of Himalayas. So in the upper slopes of Himalayas, we will be finding individual huts. Individual huts of the pastoral nomads like the Gaddis and Bakadwals. Okay, so harsh climate, if you talk about, is another factor which can give rise to that. So you can understand कि अगर आप हिमालयाज में जाओगे तो जो लोअर स्लोप्स होते हैं वहां पर इनके क्या होते हैं, या फिर वैलीज में विलेजेस लोकेटेड होते हैं. ठीक है, बिकॉज अपर स्लोप, कैन आई से विंटर्स में क्या होगा, विल इट बिकम फ्रोजन, बट समर्स में एज द आइस मेल्ट्स, what will happen in this area? The pastures will open up, and as the pastures open up, what will happen? These nomads will take their herds to these areas, and thus what they have done, they have made houses, resting places for themselves, summer huts basically they are. ठीक है, and they will not be found concentrated, वो दूरी पर होंगे. Like for example, few days they will stay at one place, then what will happen? They will travel to another area. So again, if you find like this houses distributed very far away from each other, that is a kind of which type of settlement? It is a dispersed settlement. Okay, so harsh climate plays a very important role. Then if you talk about other, again we can talk about the case of hazards. Again you can talk about the case of hazards. Like for example, अगर फिर से देखें तो फ्लड्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. दे अगेन फ्लड प्रोन एरियाज which experience annual floods. वहां पर क्या होगा? There will be dispersal tendencies seen. ठीक है, like for example, think तो ये सपोज इंडिया का केस है. वी नो दैट दिस इज खादर and we know that this is Bhangar. So it is here in the Bhangar we will be finding that the main village of the people is essentially built. And what is happening? You know that during the monsoon season this area will become flooded. Okay, so people are not making their permanent villages here. Just what they will do in their agricultural fields, they will keep individual units. Individual huts will be kept there like farmhouse. Okay, and this, what is the main purpose of these huts? They can rest at daytime. They can even, this can be used as a storage point for the agricultural commodities. ठीक है, so in the landscape you will be finding कि बड़ा सा agricultural field है और उसके बीच में एक या किनारे पर एक झोपड़ी, hut is present. So that is basically what this is, again dispersal. So the tendencies of hazard also give rise to what? It gives rise to
dispersal tendencies. ठीक है, then we can talk about the role of situation in dispersal, the role of situation in dispersal. So again सिमिलर टाइप ऑफ फैक्टर्स यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे. लाइक अगर हम बात करें लैंड टेन्योर सिस्टम, so land tenure system. So land tenure system में what we are finding, very importantly, many of the countries they have practiced what? They have practiced land reforms. Land reforms. Take the case of example of India का ले लें. इंडिया में बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स का वन पार्ट क्या था? Can we say one important part was distribution of surplus land? Landless laborers. ठीक है, तो सपोज this was the main village site and this was this village का agricultural field. Can I say जो rich people हैं, these rich people will not leave their immediate most nearest land. So what was the type of land actually distributed to the people? Mostly हम देखेंगे you know that ultimately there was if you talk about it was a kind of failure, land sealing. पहले आइडिया ये था कि सील करके एक्स्ट्रा लैंड सरप्लस लैंड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट दैट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल स्टेप. बट गवर्नमेंट ने क्योंकि प्रॉमिस कर दिया था, सो गवर्नमेंट हैड टू डू व्हाट? इट हैड टू अलॉट द ग्रेजिंग लैंड्स फॉर एग्जांपल टू द पीपल. सो फार अवे लैंड्स वर गिवन टू और डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल. सो सपोज समवन हैज गॉट अ पीस ऑफ लैंड हियर, कैन आई से इसके लिए बहुत फार अवे हो जा रहा है, एवरी डे गोइंग एंड परफॉर्मिंग द एक्टिविटी. ठीक है, बट स्टिल व्हाट ही विल डू, he will essentially make a temporary hut. He may prefer his main house to be located where? In the same village, but they will also have a temporary house there. ठीक है, where whenever they want they can live, they can rest in 1-2 days, 3 days, they can come back, meet their family members. ठीक है, there is a possibility in future they might even shift completely if more people are going there. ठीक है, so again such kind of systems had led to what? The tendencies towards dispersal. Then if you talk about the type of agriculture, the typology of agriculture which is practiced, so you know various types of agriculture are there. Like one type of agriculture पढ़ा है extensive farming systems. Extensive farming systems कहां पर होते हैं? जब तुमने बोल दिया तो वो भी लिख देते हैं. Extensive farming systems are essentially the ones which are practiced in developed countries. These are very specialized type of farming, ठीक है, where there is high degree of specialization. Particularly they are specializing in grain farming. So in areas में you know wheat, corn, ठीक है, these type of crops are essentially grown. और ये दोनों के दोनों कहां पर मिलते हैं हमें? स्टेपी. तो जहां पर इरिगेशन के लिए वाटर है, देयर दे आर डूइंग व्हाट? एक्सटेंसिव फार्मिंग. एंड वेयर देयर इज लेस वाटर दे आर डूइंग ranching. In both of them, you know, particularly extensive farming, it is highly mechanized. ठीक है, so very less people are needed. So they will be finding that there will be a very big house and there will be a small farmhouse in the middle or somewhere within that agricultural field. So there will be very big agricultural field, sorry, and there will be a farmhouse somewhere. कहीं पे बीच में हो सकता है, किनारे पर हो सकता है, and from there the people are living and they are managing everything through the phenomena of mechanization. So you might have seen in many of the Hollywood movies, ठीक है,
तो उसमें यू कैन वेरी क्लियरली सी काउबॉय मूवीज जो होती हैं, देयर it is very commonly seen. So type of agriculture is another very dominant factor. Then if you talk about, there are several social factors which will also give rise to such kind of tendencies of dispersal. ठीक है, तो social factors में अगर हम बात करें, this can be related with fear of religious persecution, ठीक है. So again you can understand particularly what will happen. Minorities will always have this fear, and if there is such kind of tendencies, what will happen? They will flee the village and they will settle somewhere in the forest land or open land. ठीक है. Similar kind of tendencies can be also result of what? In India के अगर हम context में देखें तो can this be generated because of the rigid caste system? The rigid caste system has generated such tendencies where the lower caste, अगर गवर्नमेंट ने उनको लैंड रिफॉर्म्स में लैंड दे दिया तो कैन आई से इट इज पॉसिबल दे विल थिंक कि जाकर के अपने लैंड में रहते हैं या रोज गालियां और जूते खाने से बेटर है. ठीक है. सो अगेन इफ यू टॉक अबाउट, very commonly this kind of tendencies would be found. So such kind of social factors, if you look into, they will also lead to generation of such dispersal tendencies. Then the role of site and situation in development of semi compact settlements. Semi compact settlements. So tell me, can we say site के रोल की बात करें तो site, can it determine? So it can determine through factors like water, land and other resource availability. Other resource availability. ठीक है. तो टेल मी, अगर हम देखें तो हिमालयाज में यू विल बी फाइंडिंग कि अगर हम हिमालयाज में जाएं तो देयर आर दीज काइंड ऑफ रोड्स विच आर लोकेटेड एंड वी विल बी फाइंडिंग कि एक जगह पर हमें कुछ एक हैमलेट मिला, ठीक कुछ फिक्स डिस्टेंस पे वहां से एक दूसरा हैमलेट मिला, देन आफ्टर सम डिस्टेंस अनदर हैमलेट आई विल बी फाइंडिंग. ठीक है. सो अगेन दे आर मेड अकॉर्डिंग टू व्हाट, हाउ मच लैंड कैन बी cut, the slopes can be cut, how much, the flat land, how much is available. Every area will have its own potential of resource with respect to water availability, etc. ठीक है. So accordingly on that logic they are built. So such kind of the role of site is very commonly found where, in areas where there is more harsher topography like the mountains and plateaus. ठीक है. In general, when there is role of site when dominates in the formation of semi-compact settlements, can I say it is expected that in near future what will happen, the scenario will remain same. The scenario will remain same. It will remain as semi-compact. ठीक है. Because here environmental factors are more dominating over possibilistic tendencies. ठीक है. But if you talk about when they developed as a role of situation
तो सिचुएशनल रोल वो सेम फैक्टर्स हैं विच आर जनरेटिंग द फैक्टर्स ऑफ डिस्पर्जल. ठीक है, दीज आर द सेम फैक्टर्स. तो फॉर एग्जाम्पल थिंक करो कि सपोज दिस वॉज द मेन विलेज एंड देयर वॉज अ शूद्रा, ही वॉज बीइंग इल ट्रीटेड थ्रू आउट इन द विलेज. अल्टीमेटली पर्सन डिसाइडेड कि यहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, एंड ही वेंट एंड सेटल्ड समवेयर. ठीक है, कैन आई से इट इज इनिशियली अ डिस्पर्स सेटलमेंट? ठीक है, बट इट इज पॉसिबल. ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से कभी मिलेगा नहीं. दे विल मीट समवेयर, और व्हेन दे विल मीट दे विल टॉक अबाउट ईच अदर. सो ही विल ऑलवेज बोस्ट कि अरे बहुत मजे में हूं. Then what will happen? Others will also think, why not leave this place where I am being humiliated every day? So can I say, is it possible a stream of migration would start? And this dispersed settlement, can we say it will convert into a hamlet? And it is possible that it can convert into a semi-compact situation? If the process continues, because the physical factors are conducive. So if the process continues, can we say, is it possible that it can grow into a compact settlement? Yes or no? It can grow into a compact settlement. So when there is the role of situation, very clearly what we find, the factors leading to dispersal start the process. Thus, dispersed settlements can convert into hamleted and semi-compact settlements. To stop, by this logic, in future they can convert into compact settlements. They can convert into compact settlements. Thus, can we conclude here about the situation role here? Can we say thus the semi-compact settlements resulting out of the factor of situation are transient in nature or transitional in nature. Semi-compact settlements arising out of situational factors are transitional in nature. ठीक है, दैट इज बेसिकली द रोल ऑफ साइट एंड सिचुएशन. क्लियरली यहां पर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं. एंड कंक्लूजन, इफ यू टॉक अबाउट, what can be the conclusion from this discussion abhi jo humne kiya? One thing is very clear, that if we talk about the settlements represent dynamic entities. ठीक है, they represent dynamic entities. And does this mean that as there are changes, particularly with respect to situation, can we say settlements, even rural settlements, would convert into what? Into urban settlements. ठीक है, सो आई कैन गो बियॉन्ड. पहले भी मैंने बताया, कंक्लूजन इज द प्लेस वेयर यू कैन गो बियॉन्ड व्हाट हैज बीन आस्क्ड. ओके, आगे बढ़ते हैं.
Pattern of rural settlements is governed by the topography. So pattern of rural settlements is governed by topography. Elucidate. I'll give you 2 minutes. ओके, कैन आई से कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट, focus on the factor of topography, how topography is essentially leading to the development of various type of patterns of rural settlement. ठीक है. So if I just talk about, so I can start with an introduction where I can say various फैक्टर्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, among the various factors or among the various siting factors, comma, topography dominantly influences the patterns of rural settlements. Then I'll come to main body. Topography comma through its characteristics like the angle of slope, presence of topographic features like mountains, hills, lakes, etc. determines the patterns of rural settlements. अब यहां पर मेरा फोकस किस पर है? टोपोग्राफी पर. तो मैं टोपोग्राफी के फीचर्स को लेकर के एग्जांपल्स दूंगा. तो टेल मी, लाइक फॉर एग्जांपल, वन गुड एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट इज व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ जेंटली स्लोपिंग टू फ्लैट topography. Gently sloping to flat topography. So tell me, in this case, what will happen? Such kind of land, is it very suitable for agriculture? So it is very suitable for agriculture. And since it is very suitable for agriculture, there is tendency to utilize maximum land for
agricultural purposes. And in this case, can we say boundedly rational humans? Boundedly rational humans make rectangular patterns. Make rectangular patterns. ठीक है, to be very common. So most common type of pattern, settlement pattern is which type? It is rectangular pattern. ठीक है, क्योंकि rectangular pattern में you can understand that if I am making rectangular pattern, better utilization of the land will be done. ठीक है, so that is one we can talk about. Then topography का part and parcel है, presence of, I am talking about the next point. So presence of topographic features like rivers. What it gives rise to? Again, it gives rise to a rectangular to linear pattern. Rectangular to linear pattern. So अगर river है, अगर suppose, तो it is possible कि river के around such kind of rectangular patterns can be found, or there can be presence of what, like fishermen houses can be present, so they can also be presence of such kind of linear, small linear villages can be found. ठीक है, other type of topographies like the case of coastal topography. The case of coastal topography. So coastal topography में again which type of settlement pattern will be very frequently seen? It will be linear. Linear type of pattern will be very, very common. ठीक है. Similarly, presence of other features like lakes. Like for example, एक feature हो सकता है Oxbow Lake का presence. So if there is presence of an Oxbow Lake, again there can be very commonly found fishermen or washermen villages can be found, and in this case what type of pattern will be resulting? Like you can see, it is semi circular. So there will be formation of semi circular patterns. So very commonly these are found where? In the Indo-Gangetic plains, very common they are. Then in particularly if you talk about in hilly topographies, there can be presence of what? There can be presence of horseshoe pattern can be found. So for example, if suppose this kind of hill is present, then what will happen? There can be formation of houses like this and a kind of horseshoe, or it is also kind of semicircular, but more like a horseshoe kind of pattern would emerge. ठीक है, तो बेसिकली ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. यहां पर मैंने ट्विस्ट नहीं किया क्वेश्चन को, यहां पर मैंने क्या लिखा? एलुसिडेट. ठीक है, एलुसिडेट इज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. I could have twisted this question and I could have written comment. ठीक है, या फिर discuss. So if I would have written comment or discuss, again you can understand the content of the question would have changed. So can I say
Topography is just one factor which is determining the patterns of settlement. If it was comment or discuss, I will have to write about the role of other factors also, which is determining the pattern. Okay. So that is something which I have to keep in mind. Okay. Question number 3 पर आते हैं. Examine the major environmental problems faced by rural settlements in India. I'll give you again 2 minutes. Okay, let us do it very quickly. When we are talking about the environmental problems which are being faced in rural areas, environment geography में हम एक theme देखेंगे, ठीक है? And this theme is that of environmental degradation, ठीक है? So अगर हम environmental degradation की बात करें, can I say environmental degradation, no doubt a very important role is being played by the humans. But is it possible that environmental degradation can also be because of natural factors? Yes or no? ठीक है? For example, if there is forest fire resulting from natural causes, can we say it will lead to environmental degradation? ठीक है? Or other kind of hazards, अभी cyclone आया, so would it lead to problems or environmental problems in the villages which were located there? If there is landslides taking place in the Himalayas, if there is earthquakes taking place, are they creating environmental problems? If there is flood and droughts, again there is environmental problems. Okay? So when you are thinking about environmental problems, you think always from the perspective of natural as well as anthropogenic. ठीक है? So अगर हम environmental problems in rural areas की बात करें, एक इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं कि although the popular perception of rural areas is that they represent pristine environments, although the popular perception of the rural areas is that they represent pristine environments, comma, they face several environmental problems. They face several environmental problems due to natural and anthropogenic factors. Due to natural and anthropogenic factors. ठीक है? तो अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है? वन वेयर द प्रॉब्लम इज जनरेटेड वेरी फास्ट. ठीक है? So tell me, can we call these problems as environmental hazards? Environmental hazards, and second we can simply call it as the environmental degradation.
ठीक है, हालांकि हम बाद में देखेंगे टेक्निकली डिग्रेडेशन से बेटर वर्ड क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, डिग्रेडेशन इज अ बिगर वर्ड जिसमें फास्ट भी आ गया और स्लो भी आ गया। तो बेटर टर्म इज व्हाट, इट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। ठीक है, तो एनवायरमेंटल हजार्ड्स के ऊपर हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हैं, लाइक यू नो सो मेनी टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स आर अफेक्टिंग, whether it is the most very common floods and droughts, अभी हमने देखा साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, earthquakes, forest fires, etc., etc. So many examples also you can give. ठीक है, so this is the one kind of environmental problem being faced by the rural areas. For example, tell me, जब flood आते हैं, ठीक है, will they lead to soil erosion? They can cause excessive land and soil erosion. ठीक है, and this can ultimately result in the land degradation. When there is droughts, there is drying of the land. ठीक है, and drying of the land will ultimately lead to what, loss of vegetation. ठीक है, and essentially again what will happen, there will be, अगर land drying हो रहा है तो winds अगर चलेंगी तो will they cause more erosion. ठीक है, so again it will ultimately lead to what, degradation of the land. Cyclones cause what, flooding, same problem related with cyclones. ठीक है, so I can talk about how they are environmental problems creating. Then there can be environmental pollutions because of natural causes से हो सकता है. ठीक है, like for example think about, can we say there can be qualitative degradation of groundwater. Degradation of the groundwater, is it possible? Like for example ये कई तरह से हो सकता है. Suppose if groundwater comes in contact with magma, what will happen? Its temperature will rise, and can we say such water will become unsuitable for agriculture? ठीक है, similarly if you talk about, there can be other reasons, for example slow chemical weathering. ठीक है, slow chemical weathering of the rocks can lead to problems like arsenic pollution. ठीक है, so it can be result of what, it can be result of such kind of degradation. नाइट्रेट्स का बढ़ जाना, या फिर अगर हम बात करें तो many of the salts increasing. Again these are basically result of what, they are result of environmental pollution. ये slowly ये processes operate करते हैं, but no doubt they will create environmental problems. So when I'm thinking, I will not miss these, and ideally they should form almost 30 to 40% of the main content that you will be writing. And then you move on to the anthropogenic factors. Anthropogenic factors. So tell me, can we say we can divide it into number of things? What is the most dominant human activity done in rural areas? It is agriculture. ठीक है, so first I can definitely talk about the agriculture से related issues. और agriculture से related issues के लिए agriculture topic के अंदर तुमने पढ़ा है consequences of green revolution. ठीक है, consequences of green revolution, is it there on the hydrosphere? Is it there on the land? Is it there on the biosphere? ठीक है, so all of these you can definitely talk about. For example, can we say agriculture can lead to the type of agriculture we do? Does it leads to monocropping? ठीक है,
It essentially leads to monocropping. There can be problems related with biomagnification. ठीक है. So again I can talk about कि उसका बायोस्फीयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. There is water bodies पे बात कर सकते हैं. Like for example, in the water bodies like lakes etc., can it lead to eutrophication problems? Can lead to eutrophication problems. Chemicals going downwards in the groundwater, again they will pollute the groundwater. और इन कोस्टल एरियाज इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम्स. इट कैन रिजल्ट इनटू. ठीक है. तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द हाइड्रोस्फीयर? आई कैन टॉक अबाउट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द, इफ यू टॉक अबाउट द लैंड. So many faulty agriculture and irrigation practices, what they are doing? Can we say they are leading to land degradation? Many faulty agricultural and irrigation practices are leading to land degradation. Like for example, many times farmers are doing what? They are sowing their fields in the direction of the slope, so that excess water can drain and the fields can be easily worked. But इससे क्या हो रहा है? There is soil erosion accelerated. ठीक है. So numerous examples we can essentially give, and we can talk about how it is leading to land degradation. So agriculture के ऊपर I think almost 20% of the answer, main body का content, it should be related with agriculture. और ये enough content है if you have studied the topic of consequences of green revolution. ठीक है. So agriculture is the main activity. Then can I talk about other economic activities? So other economic activities are also leading to the issues. Like for example, think about this. One activity which is very commonly taking place is mining. So mining is leading to what? एक फिनोमेना हो सकता है जिसको बोलते हैं लैंड स्कैरिफिकेशन. लैंड स्कैरिफिकेशन. ठीक है. लैंड स्कैरिफिकेशन क्या होता है? द अपर फर्टाइल लेयर इज एंटायरली रिमूव्ड, ड्यू टू विच द लैंड बिकम्स बैरन. The upper fertile layer is entirely removed, due to which the land becomes barren. So can we say land scarification से ultimately क्या होगा? Will it lead to desertification? It will lead to desertification. What is desertification? It is progressive reduction in the capacity of the soil or land to support vegetation. ठीक है. तो अगर लैंड स्कैरिफिकेशन हो रहा है तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. देन अदर इश्यूज हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, वन वेरी कॉमन फिनोमेना इज एसिड माइन ड्रेनेज. एसिड माइन ड्रेनेज हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, वेयर देयर इज दिस माइनिंग रेसिड्यू केप्ट. ठीक है. और ये माइनिंग रेसिड्यूज में वेरी कॉमन रेसिड्यू विच इज फाउंड इज सल्फर. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर वाटर percolates here, can it convert into sulfuric acid? So this sulfuric acid can drain on the surface and enter into water bodies, or it can even go and affect the groundwater. So this phenomena is referred to as the acid mine drainage. So mining से बहुत सारे issues generate हो रहे हैं. Similarly, can you understand others? अगर हम बात करें other activities, like some industries can also be found in these areas. Like for example, very common is the presence of brick kilns. And brick kilns, do they generate? Again, they lead to land degradation, and they also pollute the air quality. ठीक है. सो सेकंड कैटेगरी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया. देन थर्ड कैटेगरी
social factors. So tell me, if we are talking about social factors, can we say several social practices can also lead to environmental problems? So several social practices. So for example, immersion of idols in water bodies. Will it degrade the water bodies? It will do. ठीक है. इंडिया में अगर हम देखें तो अभी भी देयर इज अ इशू ऑफ ओपन डेफिकेशन एंड इट इज अ कल्चरल प्रॉब्लम नाउ. ठीक है. तो ये तीसरी कैटेगरी में आई कैन राइट. देन देयर इज अनदर कैटेगरी आई कैन राइट अबाउट. टेल मी, कैन वी टॉक अबाउट द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ pollution from cities, spillover effect of pollution from the cities. ठीक है. So for example, you know there is Kanpur, and Kanpur में क्या है? Leather tanneries are located, and from these leather tanneries, waste which contains several chemicals is released into the Ganga river. And as a result, tell me, will it create environmental problem for the villages located downstream? So it will affect the downstream villages will be affected. ठीक है. So that is the how the environmental problems of the rural areas should be seen. ठीक है. Obviously conclusion में what needs to be written, अगर हमें solution की बात करनी है तो how we can solve most of these problems. We cannot take care of essentially the physical factors. Physical factors, they are natural factors. तो वहां पर हम ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते. ठीक है. व्हाट वी कैन एट बेस्ट डू, वी कैन मैनेज. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज फ्लड प्रॉब्लम्स, कैन वी से देयर कैन बी फ्लड प्लेन जोनिंग which can be done. So we have to change our behavior for dealing with the physical factors or the natural problems. But very clearly in human problems, many things essentially can be done. For example, यहाँ पर तो ज़्यादा लिख नहीं सकते हो, तो can you talk about development of sustainable agriculture? ठीक है. And in fact, the development in village areas should be on what? On the watershed development strategy. ठीक है. So we'll take a break. Break के बाद मिलते हैं 20 minutes.